Hello friends, welcome to this educational blog. So today I'm going to discuss about Factories Act 1948. It's a very important act or law which is established for welfare of the workers working in a factory, to safeguard their lives, to give prevention them against any kind of accident, to safeguard workers against exploitation from factories owners, to fix their minimum wages, to fix their working hours and such conditions. So let's start this. So Factories Act 1948, it's one of the very ancient law. It is one of the oldest law. It was first introduced in 1981. And it was introduced at the time of Lord Ripon's time, and so we can say that it is a law that was established in the British colonial period. But at that time, like there were factories in India, it was established during that time. But after that, at that time, it was established for the children, for the workers, and it was meant for the children, especially that. Children between age of 7 to 12 years of age can work in a factory, not less than that, and there should be proper safety working conditions for children and workers also. But later on, this act, there were improvements in this act, and it was improvised two times after that. But fourth time it was improvised. It was improvised fourth time, during the independent India. I mean, it was not. It was in 1949. So it was actually in 1948. It was passed in the Constituent Assembly, the revised form of law. It was passed in the Constituent Assembly in 1948, 28th August, and it was then came into existence and practiced in 1st April 1949. That is during the independent India, after independence. So this is very important law for workers working in a factory, to prevent them from exploitation and provide them safety conditions to work. So what is the objective is to ensure safety and sanitization of workers in a factory, and to provide welfare to the workers, both male and females, and prevent them from exploitation against long working hours, then wages, hazardous life risk working conditions. So we can see that in factories where lots of manufacturing works takes place, काफ़ी सारी चीज़ें goods, हर तरह के goods manufacture होते हैं. There are lots of employees working. Means there are small factories also, there are big factories also, but at least there should be 10 plus employees in a factory to enact this law. Means इस law को applicable होने के लिए at least 10 workers होने चाहिए factories में, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा उन वर्कर्स की सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग कंडीशंस के लिए. ओके, सो मीन्स एज वी कैन सी दैट वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, एज दे हैव टू डू लॉट्स ऑफ लेबर वर्क, सो उनके देर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज कि बिकॉज दे आर डूइंग लेबर वर्क, सो उनके उनको वेजेस वाइज मीन्स उनको कम सैलरी दी जाए, या फिर प्रॉपर सैलरी ना दी जाए अकॉर्डिंग टू दे कैन अफोर्ड प्रॉपर मील्स एंड मीन्स लाइक जो एक मिनिमम लिविंग इंडेक्स होता है उसको वो अफोर्ड ना कर पाए. देर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड ऑल्सो देर आर पॉसिबिलिटीज दैट इन फैक्ट्रीज एज लॉट्स ऑफ मशीनरी वर्क हैपन्स. काफ़ी सारी मशीनरी वर्क होता है, मशीन से काम होता है, और हजार्डस कंडीशंस में काम होता है. देर आर सम फैक्ट्रीज जहाँ पे काफ़ी सारे एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस होता है. सो देर कैन बी अ केस कि उन सब फैक्ट्रीज में वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ लाइक वर्कर्स इन दोज फैक्ट्रीज आर क्वाइट रिस्की. सो उन वर्किंग एनवायरमेंट को से बचाने के लिए वर्कर्स को के लिए काफ़ी सारा सैनिटाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी सारी वेलफेयर कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं, सो दैट दे कैन प्रिवेंट फ्रॉम एनवायरमेंट, एंड दिस सैनिटाइजेशन इज इंश्योर्ड इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948. ओके, सो
Also, it includes inspection and observations of working conditions in a factory, monitors factory owners, ensures that they don't exploit workers. Means basically factory के जो owners होते हैं, so there is a rules and regulations which is written in this Factories Act. This Factories Act is made up of 120 sections. उन 120 sections में फैक्ट्रीज के ओनर्स जो हाई अथॉरिटीज हैं, लाइक देर आर लाइक ऑक्यूपायर्स होते हैं फैक्ट्रीज में, मैनेजर्स होते हैं, सो उनके लिए लाइक देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दे इंश्योर proper safety and sanitization for the workers in a factory, so that they don't get they prevent from any accidental conditions, any accidents, or they don't get exploit due to any kind of exploitation, physical exploitation or financial exploitation. They get prevent from them. So rules and regulations factories के owners, ऑक्यूपायर्स और मैनेजर्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है फैक्ट्रीज लॉ के सेक्शंस में. ओके, नाउ थर्ड इज टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस एंड पेड लीव्स एज पर लॉ. सो दो देर आर वर्कर्स, बट एटलीस्ट उनको मिनिमम वेजेस तो मिलना ही चाहिए, सो दैट दे कैन अफोर्ड मील्स एंड अ डिसेंट, आई मीन एज पर जो एक प्रॉपर लाइक दे कैन अफोर्ड देयर व्हाट यू कैन से नीड ऑफ देयर लाइफ. जो उनके मील्स हैं एंड जो एक मिनिमम लिविंग इंडेक्स है वो उनको अफोर्ड कर सके, तो उनको एटलीस्ट प्रॉपर मिनिमम वेजेस तो मिलना ही चाहिए. प्लस उसके साथ साथ उनको कुछ लीव्स भी मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, एंड पब्लिक हॉलीडेज उनको मिलना चाहिए. सो दोज थिंग्स वेयर मेंशन इन द फैक्ट्रीज एक्ट. नाउ it ensures healthy working conditions, prevention from exploitation to workers, males, females, and it sets the safety standards for the workers. So safety standards के at 120 sections जो भी हैं फैक्ट्रीज एक्ट के 120 sections है, उन सभी sections में workers की safety standard को ही most priority माना गया है कि whatever the rules and regulation are being established or made, it is taking care of the workers healthy, workers safety conditions, and safety standards have to be made, and those have to be followed at any cost. Now, so let's talk about its establishment. So as I said earlier, it was an oldest act, means like it was established pre independent India in 1981. It's an act of colonial period, British colonial period, but it has improved. Improvisation हुए हैं इस एक्ट में 2 to 3 times at those time, and फोर्थ टाइम जो इसका इम्प्रोवाइज्ड एक्ट फॉर्म हुआ है, दैट इज 20 अगस्त 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पास हुआ था, एंड इट वॉज केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1 अप्रैल 1949. Okay, so as I told earlier, it has 120 sections, and these 120 sections there are lots of rules and regulation for ensuring healthy and accidental and preventive working environment for the workers. Also, some sections monitors guidelines for owners, occupiers, managers of factories to safeguard workers' working environment or healthy conditions. So this was about the Factory Act which was established. Now this Factory Act is applicable to what kind of bodies? Factories Act is applicable to manufacturing, factories where goods manufacture takes place, any kind of good which is related to clothing, footwear production, dyeing, finishing textiles, or also there should be at least 10 plus workers. Earlier it was 10, but now it is 20 plus workers should be there. The strength of the factory should be at least 20. After that only this Factory Act will be enacted. Otherwise less than 10 या 20 वर्कर्स की कंडीशन में, लेस देन 20 वर्कर की कंडीशन में ये एक्ट इनैक्ट मीन्स ये एक्ट को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता. सो देर आर सम ऑफ द बॉडीज जहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे इस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना इज नॉट लाइक राइट. सो दीज आर द माइनिंग इंडस्ट्रीज. माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए माइनिंग एक्ट अलग है, वहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्रीज में माइनिंग एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है. दीज आर डिफरेंट. होटल्स एंड रेस्टोरेंट में ये फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है.
Now, what are the importance of these act? So importance, as I said earlier, to prevent workers from any kind of exploitation, female, male workers from exploitation. To I mean, in factories we know that there are children also. I mean, children employment भी होता है, but there should be a certain conditions कि जहाँ पे children employment किया जा सकता है. सबसे पहले तो that children age should be like between 14 to 18 years of age, and plus उनके टेक केयर करने के लिए भी एक कमेटी फ्रेम की गई है कि इफ दोज चिल्ड्रन आर सफर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशन, तो वो कमेटी ही फिर उनकी टेक केयर करेगी और आई मीन दे विल लुक आफ्टर दैट. सो लेट्स चेक दिस. सो इम्पोर्टेंस इज रेगुलेट्स वर्किंग आवर्स फॉर वर्कर्स. सो स्टैंडर्डली वर्किंग आवर्स जो होना चाहिए वर्कर्स का फैक्ट्री में, दैट इज लाइक 48 आवर्स इन अ वीक, एंड 48 आवर्स टू 60 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 60 आवर्स. 48 आवर्स इज अ स्टैंडर्ड वन. ओवर टाइम काउंट होता है. ओवर टाइम का प्रॉपर उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए इफ ओवर टाइम हैपन्स, क्योंकि वर्क की रिक्वायरमेंट है. गुड मैन्युफैक्चर होता है तो समटाइम्स इट रिक्वायर्स कि आई मीन्स देयर इज लॉट्स ऑफ आई मीन पेंडिंग वर्क. सो उस वर्क को ओवरकम करने के लिए आई मीन देयर शुड बी अ प्रॉपर ओवर टाइम रेम्यूनरेशन अगर ओवर टाइम करवाते हैं वर्कर से तो. फिर देन देयर शुड बी पेड लीव्स, प्रॉपर पेड लीव्स होना चाहिए. पब्लिक हॉलीडेज एवरी 20 डेज में एटलीस्ट वर्कर्स कैन टेक अ हॉलीडे इन एवरी 20 डेज. पब्लिक हॉलीडेज उनको मिलना चाहिए. इट सेट्स द सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री. गवर्नमेंट अपॉइंट, ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, government appoint labor officers to monitor working environment. So actually फैक्ट्रीज के वर्किंग एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट दे हैव देयर स्पेशल ऑफिसर्स, लेबर ऑफिसर्स जिन्हें बोला जाता है, दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. जो फैक्ट्रीज रिक्रूट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट रिक्रूट करते हैं, गवर्नमेंट के एंड से रिक्रूट होते हैं. सो दे लुक्स आफ्टर, दे मॉनिटर्स द फैक्ट्री वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स. एंड कोई भी अगर वॉल्यूशन होता है इन फैक्ट्रीज एक्ट के जितने भी सेक्शंस है, उसमें जो भी सेक्शंस है, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस सेक्शंस को, उन रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई भी चीज वायलेट करती है तो दिस लेबर ऑफिसर विल टेक केयर ऑफ इट. नाउ अनदर थिंग इज इफ देयर आर लॉट्स ऑफ वर्कर्स इन अ बॉडी वर्किंग इन अ फैक्ट्री, सो देयर आर चांसेस कि देयर कैन बी सम डिस्प्यूट्स, किसी ना किसी मैटर पर डिस्प्यूट हो सकता है. दिस कैन बी इन एनी लाइक किसी भी स्ट्रेंथ का डिस्प्यूट हो सकता है. सो व्हाट हैपेंस कि अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पॉप्सअप होता है, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आता है, कोई भी फैक्ट्री में किसी तरह का डिस्प्यूट होता है वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में, सो इन दैट सिचुएशन एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के एंड से. सो दिस कॉन्सिलेशन ऑफिसर विल हेल्प वर्कर्स एंड ऑल्सो इट एक्चुअली रिजॉल्व डिस्प्यूट, जो भी लड़ाई या झगड़ा का जो भी मैटर है, इट रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स. So this conciliation officer is very important, what I can say, a very important body which is appointed by the government, state government. So they take care of the industrial dispute that happens. Now, as I told earlier, children employment भी होता है factories में, because there are certain work which is not like toxic or hazardous, but there are certain works which children can do because there are some children they need job, they want to work. So for them there are is 14 to 18 age group होना चाहिए first of all, and there are certain works which children can do between 14 to 18 years of age, which is not of machinery और मशीनरी से रिलेटेड या hazardous work नहीं होता है या toxic work नहीं होता है, but there are certain works. So in that case what happened, there is separate committee जो इन चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स इन चिल्ड्रन वर्कर्स को टेक केयर करता है. दैट कमेटी इज चाइल्ड लेबर कमेटी. तो ये चाइल्ड लेबर कमेटी हर एक फैक्ट्री में होना अनिवार्य है. इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी. एंड इस चाइल्ड लेबर कमेटी में कुछ मेंबर्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉयर के एंड, मीन्स एम्प्लॉयर की जो हायर अथॉरिटी उसके एंड से, जो एक वर्कर जो एडल्ट वर्कर्स है उनके एंड से एक अथॉरिटी होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज एंड लोकल एंड मेडिकल ऑफिसर्स. ये इस कमेटी में इंक्लूडेड होता है. एंड दे विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, आई मीन जो चिल्ड्रन की वर्किंग कंडीशन है, या अगर उनको कुछ इश्यूज हो गया है या उनके हेल्थ में कुछ इश्यूज हो गया है, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज मेडिकल ऑफिसर्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द
Child Labor Committee. Okay, so now most important, this Factory Act, though it is mainly provide occupational safety conditions to the factory workers, and it is the oldest law of India. It was established in colonial period, but it has been revised again and again, and independent India में ये law काफी ज़्यादा improvised हुआ है. But we can see this, there are 4 laws. I mean, the 29 labor laws हैं that have been consolidated in 4 labor codes, and those codes are codes on wages, then codes on industrial relation, and codes on what I can say, occupational that is occupational safety and hazardous working condition. And yeah, so this Factories Act, actually it is consolidated under this code, that is Occupational Safety and Health Working Condition Act. So ये Factory Act जो 29 लेबर एक्ट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्ट्री एक्ट जो था, अब ये विच फ्रॉम 2019 टू 2020 मीन्स 2020 में एक्चुअली OSH कोड इस्टेब्लिश्ड हुआ है. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशंस एक्ट के अंतर्गत फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कंसोलिडेट हुआ है. एंड व्हाट इज दिस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन एक्ट, आई विल टेल सेपरेटली, because there are lots of guidelines and rules and regulation under this code also. And this Factory Act 1948 is consolidated under this one, Occupational Safety and Healthy Working Conditions Act. And every factory has to follow this Factories Act, which is under Occupational Safety and Healthy Working Conditions Act 2020, whose strength of employee or whose strength of workers is at least 20. So this is about Factory Act. I hope you like the video. So thank you for watching this video. Bye bye.